Hello, welcome back to another episode of Story of Coaches at PFC. This time I'm going to talk to Meghna, who is also a coach at PFC, and she has been training for almost 1 year. And Meghna, how are you? I'm good, Varnit. How are you? I'm great. So let's get started right away. पहला चीज़ जो मेरे को Yeah. पूछना था, how did you get into strength training? Uh, it's a very funny story, actually. So I was always this girl who is very fit. Okay, like appearance-wise, so slim and everything. So, but one day I realized that no matter how I'm looking from outside, I wasn't feeling so healthy from inside. So I had this BP issues. I had this low energy and all. So that time I was in college, and उस टाइम आई वाज लाइक कि ओके यार कुछ तो करना होगा आई कांट जस्ट कंटिन्यू विद दिस सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन मतलब फ्री में थोड़ा बहुत ओवर द इंटरनेट एवरीथिंग एंड देन उसके बाद व्हेन आई गॉट सीरियस कि नहीं आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दिस स्टार्ट करते हैं देन आई गॉट लाइक आई हायर्ड अ कोच एंड एवरीथिंग और उसके बाद फिर वो स्टार्ट किया सो दैट मतलब मेरे को इट वाज मोर लाइक कि आई नीड टू यू नो get better with my health. It doesn't matter what my appearance is, even if I'm like very thin or slim, it doesn't matter. But health wise, I should be, in a much better place than I am right now. So Okay. since then, I'm like into strength training. And you said you got a coach for yourself. So did getting a coach help? मतलब उससे help हुआ क्या? मतलब ये process में बहुत transitioning into. ज़्यादा Okay. बहुत ज़्यादा बिकॉज उस टाइम पे मतलब व्हेन यू आर न्यू यू ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ ओके आप यूट्यूब से कुछ देख लिया आपने वहाँ कोई भी इंटरनेट कोई भी साइट पे सो आई डेंट वांट दैट बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ बीएस आउट देयर एंड आई वाज लाइक कि मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ठीक है आई नीड टू गेट समथिंग विच इज ऑथेंटिक रियल जिससे मतलब मेरा just it saves time when you can hire a coach who is experienced something like जो over the internet है बहुत सारी चीजें it Okay. helped. And what kind of challenges did you face initial level पे कुछ ना कुछ होता है थोड़ा बहुत challenge like you said एक तो information वाला you mentioned कि कौन सा क्या चीज़ follow करना है general guidelines तो हर जगह मिल जाता है but like personally अपने level पे what did you face? Challenges, right? So, to be very honest, it was more of a mental challenge for me. Okay, obviously physically tha because I my body wasn't used to of lifting weights and I was very thin. लेकिन mental challenge ये था that you know my routine especially. So I used to eat a lot of junk food. Whole food मेरा कम था. Okay, तो उससे एक shift होना. Okay, then actually making a routine or habits जहाँ पे you are more into good healthy food तो वो mentally was something like those cravings that you get okay चलो खा लेते हैं बाहर से कुछ तो ये सब बहुत हद तक मुझे it was a limitation for me and कुछ हद तक मैंने उसको within a span of month or two मैंने उसको control किया but and yes, physical challenge was obviously there because I was underweight. My weight was that time around 40, and it used to fluctuate between 39 to 40. And उसके बाद वहाँ से ये weight तक आना जो मेरा अभी है it was great. It was actually difficult because मैंने हम जितना भी खाए I never used to gain weight. Okay, so that was difficult. And mentally, of course, those cravings, those emotional triggers and all, or stress level, because these things actually play a major role. And for the diet part, it was difficult because, as I said, I used to eat a lot of junk food, but whole food ज़्यादा नहीं था, healthy one. तो when I started having, घर का खाना, good things, तो उस time पे it wasn't so easy for me to actually complete the meal in one go. So what I used to do, I used to divide it, okay, 6 meals a day. And Wow. so this is how like because I was so adamant that okay मेरे को करना ही करना है I can't be like this and when I got into this nutrition ये सब field में it's like it's not about you just coaching other people you have to do something for yourself okay आपको भी करना होगा because जब तक आप practically खुद नहीं करोगे आप अपने clients को क्या बताओगे right Correct. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ओके आई हैव टू गो थ्रू दिस इट्स ओके खा रहे हैं बिकॉज कुछ कुछ लोगों को इतना भी नहीं मिलता स्पेशली दे आर इनटू कैलोरी डेफिसिट एंड ऑल बट ओके फाइन हो जाएगा
या मेक सेंस। प्लस यू सेड 6 मील्स अ डे, मैंने आई थिंक कभी नहीं ट्राई किया होगा। इट मस्ट बी समथिंग चैलेंजिंग, आई थिंक 6 मील खाना It दिन भर में। is, it is because for someone who isn't used to eating, because I'll tell you, मेरा पहले ब्रेकफास्ट मतलब रूटीन कैसा था ना, इन ब्रेकफास्ट आई यूज टू ईट लाइक 30 grams of पोहा, ओके, बहुत कम, एंड देन कुछ जूस पी लिया थोड़ा बहुत, लंच में इधर राइस हल्का सा या फिर रोटी, 1.5, नॉट मोर देन दैट, एंड then junk, good amount of junk, and then even same for dinner. So you see, whole food or healthy food, it was there but not like jitna hona chahiye. So when I shifted from that, when I eliminated the junk from my diet, that time I understood the challenge that was there in front of me कि अच्छा खाना है, इतना खाना ही खाना. You can't say कि मतलब I used to tell my coach कि यार इतना नहीं हो रहा मुझसे, and he was like कि divide it, कुछ कर नहीं सकते तो मैं करना ही करना. So yeah, hell of a challenge. बट यू मेड इट राइट, I एक्सपीरियंस made किया, it, सो yes. I'm sure it would be worth it जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल It गया। it या was, it was. and I just got to know कल ही कि that you have graduated BSc Economics, so how is that field वहाँ से transition करना इधर में भी, like fitness coaching is a different पूरा side right, Yeah. उससे थोड़ा बहुत कुछ होगी similarities अगर होगी principles का, but how does it feel as being as a graduate from a different field working in a different field? Actually, it was a complete change, obviously, because when I was in, actually, I was topper in my class, okay, and in my school. So that time, my interest was in economics, and economics में अच्छे marks आने, I'll tell you, I got 97 out of 100 in economics, okay, and so that time my teachers were like कि इसमें अच्छा है, you can go for it, and interesting था. So when जब हम कॉलेज में गए उसके बाद when I graduated, that time I felt like कि okay, this field is really good, I can do MBA or MSc in economics, but there's something missing. I don't know what, but I'm not really connecting to it, okay. So that time my one of my family members, he was into this nutrition, so he was like, why don't you just try, you know you don't have to take a course, like online ऐसे देखो. So there is some in one site, तो वहाँ पे I used to like read about nutrition and all. तो उसके बाद slowly कि अच्छा ठीक है, then I told my dad कि यार मेरे को नहीं इसमें आना economics में, I'm looking for something that actually connects to me, and then I took the certification and all, मतलब Got it. formally, हाँ, yeah. या सो हाउ इज द कोचिंग प्रोसेस गोइंग फॉर यू, लाइक उसमें चैलेंजेस भी होते होंगे, लोगों को कोच करना एज अ लाइक लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को हैबिट्स बनवाने में हेल्प करना, ये सब तो डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है एंड रिवॉर्डिंग भी होता है आई एम श्योर। सो हाउ इज़ योर Yeah. एक्सपीरियंस गोइंग ऑन विद द कोचिंग साइड ऑफ थिंग्स सो फार? It's good so far because I get to interact with so many people out there, and their perspective, their point of view regarding nutrition and everything. तो बहुत सारे मतलब है जो मतलब they don't know what exactly is it. वो जितना पढ़ते हैं इंटरनेट पे, उनको वही लगता है कि that is the truth. तो उनको उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि this is not actually, या फिर कैसे हम लोग को करना है, how you should go. So it's actually fun because I get to help people to get into whatever, to achieve their goals, whatever it is. Either their goal is to have like proper to get into a proper shape, या फिर उनको weight gain करना है, whatever it is. तो वो help जब आप करते हो ना, it kind of gives you a kick कि okay, you're doing something, it fulfills the purpose of life. So this is something that I feel या is really nice. एंड डू यू थिंक कि इसमें इन्वायरमेंट का मेजर रोल होता है, या फिर लाइक बिकॉज व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू रीच अ सर्टेन फिटनेस गोल राइट, उनको आई थिंक इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट उनको गलत डायरेक्शन में, आई एम नॉट सेइंग गलत एज इन एथिकल मॉरल लेवल पे, बट इट्स लाइक कि कुछ हैबिट्स होते हैं विच वोंट बी हेल्पफुल, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है टूवर्ड्स द गोल दे आर ट्राइंग टू रीच। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को फिक्स करना अपने? I think it's really important, because I even made a video on this, that how you can fix your environment, okay, to achieve whatever goal you have. So let's talk about weight loss, okay. So for weight loss, you have
to, like you should be like कि अच्छा मेरे को अगर environment मेरा, if it's not in sync with my goal, then it's gonna hamper my this journey. तो कैसे कैसे आप चीजें अपने ध्यान पे रख सकते हो? फर्स्ट थिंग इज योर the triggers that you have. अगर आप if you crave chocolates a lot or if you crave chips a lot, तो वो सब अपने वर्क स्पेस या आसपास हटा दो. ओके, देन सेकेंडली इट्स अपने आसपास की चीजें डोंट कीप इट मेसी, just keep it cluttered free. Okay, आप उसको, because if your mind is cluttered, your behaviors, your habits, and these things plays a major role, तो उसको हटाओ. Then secondly, go for something like if you love snacking, binge eating, तो if you have cookies in front of you, उसको हटा के आप dry fruits रख दो. So these small things plays a major role. But yes, Varnit, I think there are few factors that you can't control, like your family members behavior, their habits and all. Okay, so these things आप चाह के भी कंट्रोल में नहीं कर सकते. आप ट्राई कर सकते हो if they understand well and good, but just imagine if someone is habituated of eating pizza every day in front of you, and you are here trying to lose your weight. So आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? So I guess that time what comes into play is your discipline and self control. बाकी तो आप हटा लोगे, when you are the only person in the room, you can understand what environment you should be in. लेकिन when it comes to family members or the friend circle, that time you have to have self control and discipline. उस टाइम पे I don't think so कोई और चीज काम करती है, because 7 billion people in the world, 7 billion opinions, उनके choices अलग होंगे, उनके options अलग होंगे, but it's you that you have to know what your goal is and what you need to do. So या मेक सेंस. इसी में ऐड ऑन करना था मेरे को दैट इन सम इंस्टेंसेस मैंने सुना है अपने कुछ क्लाइंट से कि मेरे वाइफ ये बना देती हैं और मेरे पेरेंट्स ये लोग बनाते हैं, हर सैटरडे संडे ये डिश बनता है, ये स्वीट्स बनता है, वो लोग इधर जाते हैं तो ये सब लेके आते हैं. तो बट वो लोग ये नहीं देख रहे कि बाकी लोग ये कर रहे हैं, वो उस पर देख रहे हैं कि उन्होंने वो ला रहे हैं तो तुम खा क्यों रहे हो. बेसिकली ये चीज़ होता है. सो यहाँ पे आई थिंक वही लाइक यू सेड राइट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इसमें सब कुछ आ जाता है अपना कि हाउ बैड डू यू वांट इट वाला चीज़. थोड़ा सा क्लीशे टाइप का मोटिवेशन है बट इट एक्चुअली वर्क्स कि या मतलब सामने आई डू अंडरस्टैंड कि जो उनको उनके फैमिली मेंबर्स है या कोई भी है, उनको भी समझना होगा दैट एक बंदा ही इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग. ओके, वट एवर हिज गोल इज, तो उनको भी थोड़ा बहुत उस वे में देखना होगा. लेकिन कितना हम लोग बोल देंगे किसी को? ओके, आप उसको पकड़ के तो बोल नहीं सकते कि चलो यार यू स्टॉप गेटिंग वट एवर फूड दे आर ऑर्डरिंग फ्रॉम these sites and all. तो आप उसको वो नहीं बोल सकते. बट the only thing that's in your control is you. correct. Your actions and all. तो yeah, people can actually say no if they want to, matlab if they want to, exactly. Because I'll tell you something. I was a hardcore non-vegetarian, okay, a year back, and when I shifted from that to being a vegetarian right now, it was really hard for me. Like even yesterday I went out with my sister, and that time she was having chicken taco, okay. and it is tempting, but you have to say no for whatever reason it is, be it ethical or whatever. You have to say no. You have to have that self control. You can't say कि self control नहीं चाहिए. That is one major factor in your life. It should be a part of your life. It doesn't matter either it's for fitness or what, like if you're only for diet or whatever it is. If you have self control, it will take you, what you can say, long in your life. Yeah, and you have to chase that long term wala thing, right? You don't have to like Exactly. short term में तो हो जाएगा, easy हो जाता है, but it's not short like term में something. वो एक kick मिलेगा, लेकिन long term में then Correct. So इसी से related मेरा next question was that कि what kind of mindset do you generally have when it comes to being consistent in the gym? Because there is a chance कि अपने से भी कभी कभी मिस हो जाता है workouts. Could be any reason. मन नहीं किया, ये भी एक सिंपल रीज़न है. एंड समटाइम्स आई एक्ट अपॉन दैट, मैं भी छोड़ देता हूँ कि वर्कआउट नहीं करना. बट मोर और लेस इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, इवन 30 दिन में 2 बार 4 बार 6 बार वर्कआउट किया तो भी यू आर डूइंग समथिंग टू कीप थिंग्स अफ्लोट.
बट लाइक हाँ 30 में से 20 दिन करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, इट्स वो सब ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग कंसिस्टेंट व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव? Um, what I follow is a simple thing. I'm sure you have heard of it. Something is better than nothing, right? So, to be consistent, I personally believe that even if I'm not, you know, I'm not willing to go to a gym for whatever reason, as you said, मन नहीं किया या फिर you are feeling very low, उठो, फेस वॉश करो, पुट ऑन योर जिम क्लोथ्स, बस जिम में जाके बैठ जाओ. Okay, just sit there for 5 to 10 minutes. And when you are in that environment, you will automatically want to do something. Okay, and even if you don't want to, weight train or whatever, सिर्फ कार्डियो करो for 20 to 25 minutes or 30 minutes. So when you do this, आपकी हैबिट नहीं टूटती. Okay, आप जा रहे हो, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे 15-20 मिनट्स भी अगर कर रहे हो, आपकी वो हैबिट वो एक वो रहेगी. यू आर नॉट ब्रेकिंग एनीथिंग दैट टाइम. आप अपनी रूटीन ब्रेक नहीं कर रहे. तो वो जब वो हैबिट बनती रहेगी उसके बाद यू विल गेट टू नो कि हाँ ठीक है, चलो मैंने 2 दिन सिर्फ कार्डियो किया, कुछ नहीं किया, चलो अब करते हैं. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज सम डूइंग समथिंग. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, आप कुछ कुछ करो, भले ही वो छोटा सा हो लेकिन कुछ करो. जाके अगर आपने सिर्फ अगर आपका फुल बॉडी है, आज आपने सिर्फ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में मारे ना तो वो भी चलेगा, लेकिन करो. एंड दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इन द सेंस कि दे डोंट गेट दैट मोटिवेशन, और एज यू सेड बार बार होता है फ्रिक्वेंटली कि मन नहीं कर रहा है. इट्स फॉर देम. फॉर पीपल हु आर इनटू ऑलरेडी इनटू दिस फील्ड, even if they miss 1 or 2 days in a week, it's fine, because they already know their they already know their triggers and everything, even they are not willing to work out and all. But for beginners or who have just got into this fitness thing, for them these things work a lot, and I follow this philosophy. I really do. Yeah. It helps me a lot. एंड इट्स अ फॉरएवर लर्निंग प्रोसेस राइट, बिकॉज मोस्टली बिगिनर्स के पास ही ये क्वेश्चन रहता है कि कंसिस्टेंट कैसे होना है, मोटिवेशन कैसे आएगा. आई डोंट थिंक कि जिसने टाइम स्पेंड किया है 2-3 साल 4 साल, वो लोग कभी ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं. नहीं पूछते, बिकॉज उनको पता रहता है, दे नो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट फेज. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी मोटिवेशन इज ओवररेटेड. ओके, यू कांट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, राइट? या. So as I was saying that for me motivation is very overrated. Okay, you can't be motivated all the time. आप एक दिन हुए, 2 दिन हुए, when you get into the flow, वो to be very honest चला जाता है. So that time discipline matters. Okay, so if you are disciplined, if you know this is your routine, and if you know your why you are doing this, that time motivation, it doesn't really come into it doesn't really matter. तो उस टाइम पे इफ यू आर डिसिप्लिन इनफ टू गो टू जिम और टू कंटिन्यू विद द वर्कआउट्स, आई गेस दैट विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन योर लाइफ इन अ गुड वे, स्पेशली फॉर बिगिनर्स. बाकी तो फॉर पीपल लाइक अस हु आर इनटू दिस. सो एडिंग ऑन टू दिस, इसमें आई फील लाइक कि जो इनिशियल फेज होता है राइट, इवन इफ लग रहा है सफरिंग है, पेन है, ये वो है जो भी है, वंस यू जस्ट पुश योर सेल्फ इनफ, इसको में तो एक तरह से फिर ये रूटीन बन जाता है. लाइक समटाइम्स, लाइक सपोज किसी को लाइक बाइक चलाना है, किसी को कार चलाना है, तो अब वो उतना ध्यान से नहीं देखते कि कहाँ पे उनको गियर चेंज करना है. वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि हाँ स्पीड कम हो रहा है, गियर डाउन करना है, स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं, गियर अप करना है. तो इट्स लाइक दैट. वैसे ही जिम का एक्सरसाइज भी हो जाता है, खाने का भी वैसे ही हो जाता है. वंस यू स्पेंड इनफ टाइम डूइंग इट, तो वो मतलब सबकॉन्शियसली फिर आप चॉइसेस भी बेटर कर लेते हो इन मोस्ट केसेस. स्पेशल केसेस एक्सेप्शन की नहीं बात करेंगे, बट या once you have that kind of patience, once you are like giving it enough time to any goal, चाहे जो भी हो, even if you're trying to maintain weight या even if you're just trying to add some protein to your diet, कुछ भी आप करोगे ना, once ये सारी चीज़ें हैबिट हो जाती हैं तो आप सराउंडिंग में भी आप उन्हीं चीज़ों पे आपका वो टनल विजन भी सॉर्ट ऑफ बनने लगता है कि आप वही दिखता ही है. 50 चीज़ें होंगी तब भी आपको पता है कि मेरे को ये चीज़ें करेक्ट. सो एंड ये मतलब अनहेल्दी ऑब्सेशन नहीं है, इट्स लाइक बेसिक आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है कि दिस हैज़ हेल्प मी गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो अब मैं इसको खाऊंगा या खाऊंगी, वैसा ही फंडा है. यस, एग्जैक्टली. या. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अगर लिफ्टिंग वेट्स फॉर वुमेन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग पीछे हटते हैं इससे, या
कुछ ऐसा है, बट मिथ हमेशा से था, आगे भी रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है. द बेस्ट वी कैन डू इज़ लाइक स्प्रेड अवेयरनेस. बट हम लोग उसके बेनिफिट्स की बात नहीं करेंगे. बट जैसे कई लोग स्केप्टिकल होते हैं, नहीं लिफ्ट करना है, मोस्टली कार्डियो या फिर सम अदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है. आई एम नॉट सेइंग कि वो बैड है या ख़राब है, बट इट्स लाइक कि पीपल शुड लिफ्ट वेट्स थोड़े से ऑप्टिमम बेनिफिट्स के लिए. सो हाउ डू यू जनरली अप्रोच दोज काइंड ऑफ इंस्टेंसेज जहाँ पे समवन इज बीइंग अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दो सर्टेन थिंग्स की वेट लिफ्ट करना है या जो भी उसके अराउंड डाउट्स हो या क्वेरीज हो? See, what I feel that women who don't really, you know, lift weights, the major reason is because it scares them off. Okay, this is what I feel. उनको ये बहुत intimidating लगता है. उनको लगता है, on social media we have so many videos out there. Women are doing deadlifts. They are doing this barbell squats and everything. So for general population, for example, for homemakers, okay, जो who are not into really this, who are not into this field, उनके लिए ये सब जो हम लोग वीडियोस जो हम लोग देखते जब वो लोग देखते हैं उनको लगता है कि यार कितना टेक्निकल है, मतलब इतनी सारी चीजें उठानी होगी, डेडलिफ्ट करनी होगी, ठीक है. तो इट scares them off. It is very important for us to spread awareness कि it's okay if you don't want to deadlift, okay, if it's okay if you don't want to do squats. आपको सिर्फ दो दो डंबल्स चाहिए और कुछ नहीं, अ पेयर ऑफ डंबल, दैट्स ऑल. आप उससे भी अपना वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो. सो व्हेन वी मेक इट सिंपलर ना टू अंडरस्टैंड, वो एक डर या फिर एक वट एवर हेजिटेशन दे हैव, वो कम कर देता है कि ठीक है, इफ यू वांट डू कार्डियो आप करो, आराम से करो, इसके साथ बस पेयर ऑफ डंबल से ये एक्सरसाइज थोड़े बहुत कर लो एंड दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. So for coaches, I think it's very important that we design a workout plan around those, just a pair of dumbbell. तो उससे क्या होगा ना that वो उनका जो बीच में अंदर डर है वो कम हो जाएगा. बिकॉज हो सकता है कि फॉर पीपल जिन जो जो जानते भी नहीं है कि एक्चुअल में है क्या, उनको लगता है कि यार मशीनें हैं, इतनी इतनी टेक्निक्स है, हल्का सा उठाएंगे ये हो जाएगा, मतलब कुछ हाथ. तो वो डर हम लोग को ही खत्म करना है, वो किसी और को खत्म नहीं करना, राइट. एंड उसके अलावा बेसिक नॉलेज की फॉर स्पेशली होम मेकर्स, कि इवन इफ यू आर लिफ्टिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर, या फिर आप अपने बच्चे को भी उठा रहे हो, अब आप अगर वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, मसल्स वगैरह जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होंगी, तो वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा. फंक्शनल एक्टिविटीज जो बोलते हैं, एवरी डे डे टू डे एक्टिविटीज, तो वो सब सही से करने के लिए या फिर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करो. द प्रॉब्लम अराइजेस जब हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये करना ही करना है, आपको ये वाले एक्सरसाइजेस करने ही करने हैं, तब उनको लगता है कि यार क्या दे दिया मुझे, मेरे को नहीं करना, दिस इज समथिंग विच इज नॉट मेड फॉर मी. या वी नीड टू मेक इट सिंपल. वी नीड टू मेक इट समथिंग ना कि ये आपके लिए है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. जब हम लोग वो माइंडसेट से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, दैट टाइम वट एवर पर्सन वी आर टॉकिंग टू, उस टाइम पे उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ, स्पेशली वुमेन. गॉट इट. सो मेक इट थोड़ा सा अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव सो दैट कि वो कंफर्ट जोन से पुश Simpler. करने में I आसानी हो उसमें. Yeah, I would say simpler for them. ओके. That's because बाद में you can add on exercises because then they get used to it. आप फिर you educate them कि अच्छा ऐसा ऐसा है. लेकिन जब वो पहले ही इतना complex होगा, they won't get into it. And I'm not talking about women who knows what fitness or what these exercises are. I'm talking about general population जिनको नहीं पता. For them, we should make it simple. या Because we know a pair of dumbbell is enough. Okay, we know that. Even lockdown में there were there were many coaches इनके पास बारबेल वो सब नहीं था. Okay, वो pair of dumbbell से ही अपने सारे एक्सरसाइज करते थे. So सेम चीज हम लोग बाकी जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं फिर जो जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, for them we should make it simple. Yeah, makes sense, makes sense. And what are the some of the most common myths that you must have heard? Like maybe एक होंगे, दो होंगे. Myths तो बहुत सारे हैं, but like if you think of from your top of the head कि nutrition related या training related myths, तो सबसे frequently क्या you have encountered या फिर किससे डिस्कस किया? क्योंकि लोग पूछते हैं, अपने घर में भी पूछते होंगे, फ्रेंड्स पूछते हैं. So like what are those common ones? One common myth that I came across is if it's all about calorie in and calorie out, the source of it doesn't matter. Hmm.
या राइट, कि अगर सिर्फ यही है तो हम लोग कहीं से भी वो कैलोरी कंज्यूम करें तो क्या फर्क पड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक इट्स जस्ट अबाउट कैलोरी इन कैलोरी आउट. So even like yesterday only, one of my client was like, so he drinks alcohol. Okay, so he was like, if this one can of beer is equal to 45 grams of rice, तो फिर मैं वो beer ही तो ले सकता हूँ, कैलोरीज तो उतनी जा रही है. So they don't understand कि उसके बाकी benefits क्या है of having rice rather than beer. So this is one myth that I came across. And other than this, I guess spot reduction or target reduction. Okay, so people are like abs बनाने या फिर belly fat कम करनी है तो crunches मारो. उसके अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस क्रंचेस मारो. और आई गेस ये ओवर सोशल मीडिया बहुत सारे कोचेस इन कोट्स आर प्रमोटिंग कि क्रंचेस मारो तो हो गया, क्योंकि यू डोंट हैव टू डू समथिंग, देन दे suggest some supplements and all. So we won't या go into that, but so this is another myth that I come across. ओके, Target reduction. गॉट इट. सो वन मोर मिथ जो मैं इसमें ऐड करूँगा इज बेसिकली फियर मॉन्गरिंग का फंडा है, लाइक सप्लीमेंट्स आर हार्मफुल वाला चीज़. हर मतलब दे प्रॉब्ली एक केस इंस्टेंस था कि जहाँ पे एक पर्सन वॉज स्केयर्ड ऑफ कंज्यूमिंग वे प्रोटीन बट ही वॉज ओपन टू कंज्यूमिंग ए रैंडम पिल फॉर वेट लॉस या फैट लॉस. उसमें उसको नहीं डर लग रहा था बट वे प्रोटीन से उसको ज़्यादा कंसर्न था कि मेरा किडनी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ ये जो है ना माइंडसेट और फियर मॉन्गरिंग है आई बेसिकली. गेस ये पता है कैसे फैलता है, बिकॉज पीपल आउट देयर दे डोंट एक्चुअली, वो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज तो करते हैं लेकिन उसको सही यूज नहीं करते. वो वहां जाके स्टडीज नहीं देखते कि कैसे स्टडीज हो रहा है, दे जस्ट बिलीव व्हाट वन पर्सन सेज एंड वो जाके दूसरे बंदे को बोलेगा, वो जाके तीसरे बंदे को बोलेगा कि ऐसा ऐसा, वो फैल गया. लेकिन एक्चुअल में वो लोग ऐसा नहीं देखते कि ओके इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई है, इज इट रियली हार्मफुल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वे. So this is changing with time, I feel, a lot, but it's still out there. या सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक जो रखा था इट वॉज अराउंड ये मिस इन्फॉर्मेशन, राइट. बहुत सारा नॉइज़ रहता है हर जगह, हर तरह का रहता है. सम इज़ गुड, सम इज़ बैड, कुछ ऐसे ही न्यूट्रल होता है. सो हाउ डू यू लाइक कीप योर सेल्फ अवेयर कि मुझे किस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना है या फिर किस पे लाइक वी कैन इग्नोर या प्रॉब्ली भूल जाएं कि कभी ये देखा पढ़ा या कुछ भी है. बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन बंद नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, यू हैव टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, कैसे उसको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एंड इंटरप्रेट कर रहे हैं. सो हाउ डू यू गो अबाउट दिस? I just see if it's backed by science or not. Have they ओके, done any studies on it? Okay. अगर studies है, अगर it's backed by science, I go for it. It doesn't matter how many people are talking about it. If it's not backed by science, if there are no such studies done जो actual में बोल पाए कि हाँ this is what it is, so I don't follow, I don't promote it in any way. ओके. बट लाइक जैसे अपनी बात करें तो वी आर लाइक केपेबल इनफ कि समझ सकते हैं कि स्टडी में क्या बात की गई या क्या उसका जनरल जेस्ट बन रहा है. बट फ्रॉम अ जनरल कंज्यूमर या जनरल पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इसमें नहीं है, मतलब उनको नहीं मतलब है कि क्या स्टडीज़ हुआ है, मतलब दे डोंट केयर कि स्टडी है नहीं है, या स्टडी है तो उसका क्वालिटी ऑफ स्टडी कैसा है, दे डोंट केयर. तो उनके लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट कि वो कैसे रिलाई करें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे? See, उस टाइम पे as you said बहुत सारे चीज़ें हैं जो गलत भी है, ओके, ओवर द इंटरनेट. तो उस टाइम पे इफ़ यू नो अ कोच हु इज़ रिलायबल, ठीक है, इफ़ यू कैन हायर अ कोच जो एक्चुअल में यू नो कि ओके दिस इफ वट एवर ही सेज इज राइट और इट्स बैक बाय साइंस, अब उनसे बात करो, अब उनसे पूछो. बिकॉज वी कोचेज वी आर ओपन टू एवरीथिंग, वी आर नॉट सेइंग कि आपको यू हैव टू पे अस जस्ट टू क्वेश्चन. Okay, if you just want to know an answer for a question, like you don't have to pay us, you can talk to us. Okay, आप हमसे बात करो, आप पूछो हमसे कि दिस ये मुझे लगता है ऐसा है, इज इट ट्रू. So talking to someone who is experienced or who has knowledge of the field always helps, rather than just believing what people say out there. या सो वही इसमें लाइक वो अप्रोच रखना चाहिए, इधर डू द रिसर्च योरसेल्फ, खुद केपेबल बनना पड़ेगा, उस स्किल सेट लानी पड़ेगी, या फिर Yeah, कंसल्ट एन एक्सपर्ट. yeah, consult an expert. Like करेक्ट. सिर्फ कंसल्टेशन के लिए you don't like it just take 5 minutes. Okay, या पूछना ही है, right? So yes. और join a community of like minded people. Yeah, यहाँ exactly. या Join a community. We have our PFC community and करेक्ट. everything. या So there are so many coaches, answers. So
join a community like that. And you mentioned, Abiki, you transitioned yourself from non-veg food to vegetarian food, right? So I'll come to that, but before that, what does your typical day of training या पूरा week का training look like? How many days do you train, and क्या approach do you keep while training? I train, first I used to train 5 days a week. Now it's 6 days a week. Okay. And it's more like, Monday with this push-pull leg split only. Okay. And जो बच्चा है that is upper body because I focus majorly on my upper body because genetically my lower body is more what you can say like वहाँ पे fat disposition वो ज़्यादा रहता है so जितने भी whatever I eat that doesn't really कैसे समझाएं it doesn't really come on my upper body so that's why I train my upper body more than lower body Got it. so push pull leg plus the upper body that's it and then obviously one day rest and there's another day where I do that's active rest day cardio Okay. I include cardio in that. Got it. And when it comes to nutrition, what are your typical general sources of protein for the day? For me it's mostly paneer soya then I used to have egg but I even left that so it's paneer soya and dal or I love Okay. rajma yeah and then obviously there's whey protein Got my it. favorite. And what are your favorite food items? Like something which you can, I mean, you just keep going back to it again and again. Doesn't have to be a healthy food item. It can be a Yeah. junk. um, let's talk about healthy first. Oh, sure. so so it's rajma chawal and anything made of paneer okay घर का मम्मी के हाथ का and if talking about बाहर का खाना then we get this rice bowls with lot of veggies okay lettuce and then cabbage and everything so I really like that I like that a lot with they have those mayonnaise on it Yeah, different type of sauce so that's something that I usually crave it's got my it. favorite I haven't now eaten you my know lunch so Vanit far. what to order for me when we meet Yeah, next definitely. And plus, I'll order some ice cream for myself. So, no do it for me too you like ice creams? yeah Oreo ice cream I really like that. Nice, interesting. Okay. And before I wrap up this podcast as well, so I would like to know any of those three tips, advices, or suggestions that you would like to give it to people. Any, I mean, like spread across the all age, gender, and everything. So, what would be those three suggestions that they can use to improve their fitness levels? I the first would be consistency over perfection. Okay. So when a person starts their fitness journey, they usually go for perfection. Okay. मेरे को यही यही खाना है इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं खाना they restrict themselves. I would say हटा दो वो for the time being because you know your habits. You know what for how many months or years you have been habituated of eating whatever food you will. Okay, majorly junk or whatever it is. So go for consistency. अगर आप if one day आपने मिठाई खा ली people are like यार मिठाई खा ली यार आइसक्रीम खा ली अब मुझसे नहीं होगा मतलब मुझसे होगा ही नहीं वो छोड़ देते हैं दे गिव अप तो परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे आओ कि ठीक है अगर खा ली कोई बात नहीं अगली बार 100% ट्राई करेंगे कि नहीं खाए कम बैक टू ट्रैक so Yeah. this is one advice that I would give them consistency okay over perfection then secondly don't follow the mass okay because people out there they are yeah and this is especially for people who are getting into fitness okay वो लोग people out there are going to gym they are trying different splits they have different body goals and everything for someone जिसको सिर्फ fitness चाहिए stop following that go for very basic things okay include cardio in your routine okay just try to cut down on junks that you are already having okay when you stop following the masses उस टाइम पे you don't have that pressure on yourself you are like okay we just need to correct these small things in our life and things are so simple the problem arises when people make it so complex so difficult Yeah. ओके मेरे को वे प्रोटीन चाहिए अच्छा मेरे को क्रिएटिन लेना होगा मेरे को ये सारी चीजें लेनी मतलब फिटनेस कितना डिफिकल्ट है ओ गॉड इट्स नॉट एक्चुअली एंड third advice is very simple and that is you even if you're not planning to hire a coach or something what you can do is
just for your basic diet that you are aiming to improve, the first thing that you should add in your plate is salad. Okay. Once you have those veggies or salad in your plate, go for protein source. If you're non-vegetarian, go for chicken or whatever it is. If you're vegetarian, add soya, paneer, yes. And then go for carbs. उल्टा मत करो. नीचे से जाओ. Okay, salad जाओ, then protein and then carbs. So these three things that I would advise, if people follow these three things, it's not so difficult to get fit. And then, yes, it's one more. Sorry, the Yeah, yeah, fourth sure. one is keep a journal. Keep a journal. It's not just about you writing down your thoughts or what happened in your life. Keep a journal that what are your triggers? Why were you craving a particular kind of food? Or what made you crave a particular kind of food? So when you keep a journal of, or even if you're keeping a workout log or whatever, if for example एक दिन आप नहीं गए वर्कआउट करने, तो क्यों नहीं गए? अपने आप को पनिश मत मत करो, बट जस्ट बी ट्रांसपेरेंट विथ योर सेल्फ कि ओके दिस इज व्हाट आई फेल्ट, और this these are the things that I was thinking when then I started craving food, or ye triggers were emotional triggers or whatever. When you keep a journal, you are more aware about yourself. And when you are more aware, that time you know what things are there that can control you and what all you need to do so that you don't let those things control you. अगर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं रहेगी, it doesn't matter whether you hire a coach or someone, you will come back to the old habits that you had. Self awareness is very important. This is what I personally believe. Keep a journal, please keep a journal. Got it. I'll be definitely like summing down these points एक बार and share करूँगा सबसे. Journaling is something I don't think मैंने discuss किया है in depth, but I think it's a very helpful tool, not just It for is very not helpful. just for training or nutrition, but overall I think सब चीज़ों के लिए helpful रहता है वो. I completed, I guess, 3 diaries last year. I should journal a lot. I even do right now. अभी बीच में gap आ गया because I wasn't really in my hometown, so I was out for some reason. लेकिन then I again started, and उस diary में it's not just about what you did from day to night. It's about, okay, what were the uncomfortable things that happened to you? How was your thought process that time? How was your mindset? How you can improve? Okay, self assessment. And when you add these things now in like when you use this tool for your diet, for your workout, overall fitness, it helps a lot. Uस Yeah. time you know what you are, your diary know what you are, and when you know that, other person can't tell you कि okay these are the things that missing in you. आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये चीज में करेक्ट करना है. सेल्फ करेक्शन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे वो फिटनेस के लिए या फिर किसी और चीज के लिए. वो करने के लिए जर्नलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एवरीवन शुड डू दैट. Yeah. डू यू डू? Yeah, I do. Yeah, I do. I have been doing it since 2017, regularly. Great. So yeah, it has been very helpful. Some days it's just a couple of pointers. Some days it's just a Yeah. two-page kind of thing going on. I mean, it's a mix of things overall, but I Yeah, have been exactly. consistent about it. Yeah, and this was very helpful. I'm sure the audience will find a lot of value in this episode. So yeah, thank you for joining in.